हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम HPSSC द्वारा कंडक्ट किए एग्ज़ाम HPPCL असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल का टेक्निकल पोर्शन देखेंगे। इससे पहले हम आपका जीके पोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आप उन वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द वेलोसिटी अलोंग द सेंटर लाइन इन लेमिनार फ्लो थ्रू अ pipe of 8 centimeter dia is 2 meter per second. The velocity at a radius of 2 centimeter in meter per second is, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर था इस क्वेश्चन का 1.5। देखिए, मैं क्वेश्चन इसमें पूरा नहीं दिख पा रहा है बिकॉज अगर आप क्वेश्चन को पूरा दिखाते हैं तो होगा ये कि जो आपको क्वेश्चन है अच्छे से विजिबल नहीं होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को रीड आउट भी कर रहा हूँ साथ साथ में। नेक्स्ट है आपका एनसी कंट्रोलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये होता है आपका कॉन्टिन्यूस पाथ पोजिशनिंग। नेक्स्ट है आपका जैम नट इज अ लॉकिंग डिवाइस इन विच अ स्मॉलर नट इज टाइटन्ड अगेंस्ट मेन नट क्रिएटिंग फ्रिक्शन एट द कॉन्टेक्टिंग सर्फेसिस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ CNC पार्ट प्रोग्राम ब्लॉक, आपके पास ये प्रोग्राम दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। द टाइप ऑफ टूल मोशन विल बी, आपको टाइप ऑफ टूल मोशन बताना था, कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। द रेशियो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फोर्स्ड वाइब्रेशन टू द डिफ्लेक्शन ड्यू टू द स्टैटिक फोर्स इज नॉन एज, इसे कहते हैं हम मैग्निफिकेशन फैक्टर। When two concentric springs are made of same material having same free length and compressed equally by axial load, then the load shared by each spring is proportional to, किसकी प्रोपोर्शनल होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा स्क्वेयर ऑफ वायर डायमीटर ऑफ ईच स्प्रिंग। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है यहाँ पर। द फ्रिक्शनल टॉर्क transmitted by a cone clutch is same as that of trapezoidal pivot bearing. In a Q designation, आपके पास डेजिग्नेशन दिया गया है ABS, और व्हाट डज S रिप्रेजेंट, यहाँ पर S क्या रिप्रेजेंट करता है, S रिप्रेजेंट करता है आपका अराइवल पैटर्न। द shear stress at the wall of 16 centimeter diameter pipe in the laminar flow is 36 Newton per meter square. The shear stress at the radius of 4 centimeter in Newton per meter square is, तो सॉल्व करके जो हमारे पास यहाँ पर आएगा वो आपका ऑप्शन सी 18। The distribution of arrivals in a queuing system can be considered as pure birth process. Option A is right answer. What is the effect of surging in steam turbine on the speed of rotation? Rotation decreases. Option B is your right answer. When a circular shaft is subjected to torque, the torsional shear stress is 0 at the axis of rotation and maximum at the outer surface. ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपके पास है ऑयल की डेंसिटी दी गई है 800 kg पर मीटर क्यूब, डायनेमिक विस्कोसिटी दी गई है आपके पास, एंड फ्लोज थ्रू अ स्मूथ पाइप ऑफ 100 mm डायमीटर। आपको मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर लेमिनार फ्लो विल बी, तो ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होना था, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। In the fillet welded joint, the throat of weld as compared to the size of weld is about 0.707 times. Continuity equation is satisfied by, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें आपको यही करना होता है, शायद इसको डेरिवेटिव करना होता है और ये आपका ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। The flywheel of steam engine has a radius of gyration of 1 meter and mass 2500 kg. The starting torque of the steam engine is
500 न्यूटन मीटर। डिटरमाइन एंगुलर एक्सीलेशन, ठीक है, तो यहाँ पर एंगुलर एक्सीलेशन आपकी 0.6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होनी थी। In a cantilever beam, if the length is doubled while keeping the other cross section and concentrated load acting at the free end the same, the deflection at the free end will be 8 times. To solve degeneracy in the transportation problem, we have to allocate the smallest element epsilon in such a cell which will not form a closed loop on the other loaded cell. Option A is right answer. A weight force on a plunger fitted in a container filled with the oil, thereby producing a pressure of 1.5 Newton per mm square in the oil. The bulk modulus of oil is 2800 Newton per mm square. Give this situation, the volumetric compressive strain produced in the oil will be, right answer आप देख सकते हैं ऑप्शन डी. The model which gives physical or visual representation of problem is iconic model. As the clearance increases, the punch force required decreases. If a square section fin is split longitudinally and used as two fins, the total heat flow will increase. A 120 volt electric resistant heater draws 10 ampere. It operates for 10 minutes in a rigid volume. Calculate the work done in the on the air in the volume. तो ये इसका राइट आंसर. इसमें तो कुछ नहीं करना था आपको, 120 × 10 और इसको टाइम से आपको मल्टीप्लाई करना था. तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर सेकंड्स आ जाने थे और ये इस तरीके से 3 और 1 4 जीरो बन जाने 12 के 72, ठीक है. और इसको आप ऐसे लिख सकते थे और फिर आप इसको किलो जूल में कर सकते थे यहाँ से. A heat pump is provide 2000 kilojoule per hour to house maintained at 20 degree centigrade. If it's minus 20 degree outside, what is the minimum power requirement? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा. A velocity along the radius of a pipe of 1.1 meter radius varies as u is given to you and the viscosity of fluid is given to you and the shear stress you have to calculate. तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी. Time required for printing 4 books A, B, C and D is 5, 8 and 7 and 5, 8, 10 and 7 hours, while its data entry requires 7, 4, 3 and 6 hours respectively. The sequence time that minimize total elapsed time is, option A is your right answer. An inventor claims a thermal engine operates between ocean layers at 27 degree and 10 degree centigrade. It produces 10 kilowatt and discharges 9900 kilojoule per minute. Such an engine is impossible. According to Indian standard 58 H8 G7 means designation of fit of two parts and the basic size is 50 mm. Maximum shear stress developed on the surface of solid circular shaft under pure tension is 240 megapascal. If the shaft diameter is double, then what is the maximum shear stress? तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 30. कि ये क्वेश्चन यहाँ पर लोड नहीं हुआ है तो आप इसे छोड़ सकते हैं. Leader's line on steel specimen under simple tension test is directly indication of yielding of material due to slipping along the plane of maximum shear. Materials management brings about increased productivity of capital by preventing large amount of capital locked up for long periods in the form of inventory. In a sphere under steady state condition with uniform heat generation, the temperature gradient at the half the radius location will be 1/2 of that at the surface. Replacement of an item will become necessary when old item becomes too expensive to operate or to maintain.
Flirt's technique is a method used for solving assignment model. In a steady flow along a streamline at the location of the flow, the velocity head is 6 meter, the pressure head is 3 meter, and the potential head is 4 meter. The height of hydraulic gradient line at this location will be 7 meter. The component of the Rankine cycle that leads to the relative low cycle efficiency is your boiler. For a floating body to be in stable equilibrium with the useful notation, I upon V greater than GB. If the degree of drawing is 0.5 and the initial area is 100 mm square, then its final area in mm square is equal to this much, 50. The point that connects the saturated liquid line to the saturated vapor line is called triple point. Two long parallel plates of same emissivity 0.5 are maintained at a different temperature, having radiation heat exchange between them. The radiation shield of emissivity is 0.25. Placed in the middle will reduce radiation heat exchange up to 3/10. Option is the right answer. The density of liquid is given to you and the value of G is given to you. You have to calculate specific weight, and option C is the right answer. Which of the following defects occur due to the entrapment of gas bubbles by the freezing dendrites during cooling of molten pad? ये होती है आपकी porosity. The joint in the wall mechanism of reciprocating engine is your knuckle joint. The ordering cost per order and average unit carrying cost are constant. The demand suddenly falls by 75%, then the EOQ will be increased by 50%. A steam power plant is designed to operate on a Rankine cycle with a condenser pressure of 100 kilopascal and the boiler outlet temperature of 500 centigrade. If the pump outlet pressure is 2 megapascal, calculate the ideal turbine work output. तो ये होगा option A right answer. A gauge pressure of 400 kilopascal acting on a 4 centimeter diameter piston is resisted by a spring with a spring constant of 800 Newton per meter. How much the spring compressed? Neglect the position, weight and friction. Option A, option B आपका right answer है. As the size of component increases, the endurance limit of the component decreases. For a static balancing of shaft, the net dynamic force acting on the shaft of shaft is equal to be 0. In a quasi-equilibrium process, the pressure is everywhere constant at any instant. According to the distortion energy theory of failure, the relationship between yield strength and the tensile yield strength is option B आपका right answer होगा. Kane curve is the graph between volume ratio to freezing ratio. If reamer is found to be cutting while rotating in the clockwise direction and when viewed against the entering end at the right angle is known as left-handed reamer. Frankel defects are, ये तो आपको पता है point defects होते हैं. A differential manometer connects two points along a pipeline gives a reading of H meter. The flow will be independent of the slope of pipe and the direction of flow. A column of length L is fixed at both ends. Its equivalent length कितनी होगी? 0.5 L. ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका हेक्सागोनल. A disc spinning on its axis at 20 radian per second will undergo precision when a torque of 100 Newton meter is applied about an axis normal to at an angular speed. If mass moment of inertia of the disc is 1 kg,
मीटर स्क्वायर। तो आंसर यहाँ पर आपका 5 रेडियन पर सेकेंड है। इन फ्री कन्वेक्शन द स्लोप ऑफ कर्व NU वर्सेस GRPR, Nusselt number, Grashof number और Prandtl number increase with increasing of Grashof and PR। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नहीं आया है। अ गवर्नर इज सेड टू बी हंटिंग इफ द स्पीड ऑफ इंजन फ्लक्चुएट्स continuously above and below mean speed, which are the not true for crystallographic axis, they must be perpendicular to each other. On heating one solid phase result into the other solid phase which is and a liquid phase during peritactic. A closed coiled helical spring has wire diameter 10 mm and spring index 5. If the spring contains 10 turns, then the length of the spring wire would be 1570 mm. Which of the following screw thread is adaptable to the split type nut? ये होते हैं आपके trapezoidal threads. Sustainable manufacturing is required for conserving resources, proper maintenance, reuse, all of these. The most suitable system for a retail shop is FSN analysis. The modulus of elasticity and the rigidity of are 200 gigapascal and 80 gigapascal. The value of Poisson's ratio, यहाँ पर आंसर 0.25. What happens to the efficiency when temperature of Rankine cycle is increased? Efficiency increased. In order to substantially reduce leakage of heat from atmosphere into cold refrigerant flowing in a small diameter copper tubes in a refrigerant system, the radial thickness of insulation kit cylindrically wrapped around the tubes must be considerably higher than the critical radius of insulation. Option A is the right answer. Scabs are casting defects which occurs as a rough and irregular projection on the surface of the castings. Angle made by the absolute velocity of the steam to the horizontal is called nozzle angle. A wheel accelerates uniformly from the rest to 2000 rpm in 20 seconds. What is the angular acceleration? तो ये आपका option C. The boundary layer thickness in a laminar flow is option C. The wheel of moving car possesses kinetic energy of translation and rotation both. In hydrodynamic bearing, the axis of journal is eccentric with respect to the axis of bearing. Two radiating surfaces given to you, A1 having area equal to 6 meter square and A2 having area 4 meter square. Then the shape factor F1 to 2 is equal to 0.1 and the shape factor F21 will be 0.15. Coefficient of discharge, product of CV, coefficient of velocity and coefficient of contraction. In a differential manometer had 0.6 meter of fluid A and found to be the balance of head of 0.3 mm of meter fluid B in limb 2. Ratio of specific gravities of A and B S1 H1 equal to S2 H2. तो आंसर होगा 0.5. Choose the correct statement. Flow through pipes. In laminar flow, the exit Nusselt number in the fully developed condition is lower than at entry. तो ये थे आपके टेक्निकल क्वेश्चंस। देखिए सॉल्यूशन मुझे नहीं आता था, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपको एक आइडिया सा लग चुका होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके HPPSC में। देखिए जो उसकी टेक्निकल पोर्शन फिर भी बहुत अच्छा आता है, बट जो उसका आपका जीके सेक्शन होता है वो थोड़ा एडवांस लेवल का आता है। क्वेश्चंस आपसे इस तरीके से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं कि एक गैस लगाना भी मुश्किल हो जाता है समटाइम, अगर आपने जीके की वीडियो देखी होगी। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई है आप लाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ऐसे, और शेयर कर सकते हैं। अगर आप कुछ और भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।